I think there must be a connectivity issue because Prerna isn't responding. As far as both of you are concerned, let's at least continue with what we were doing yesterday, our capital budgeting session. Deepti, can you just quickly tell us the reason for a capital budgeting exercise? Deepti, are you there? Deepti is not there, I think. So basically what we were doing yesterday was different methods of capital budgeting. Now, broadly speaking, capital budgeting means how do I use my capital to make some money? In which project should the company get involved? In which should it put its money so that it can generate income and profits? That is the purpose of capital budgeting. So capital budgeting, what you basically try to do, whether it is the NPV method or the IRR method, which is basically the same thing, you're looking at it from two different viewpoints. In one case, you are focusing on the rate of return. In the other, you are looking at the amount by which your wealth will increase. But in both cases, the purpose is the same. The purpose is to see that if I go for this project, will I end up making money and creating wealth, or will this be an exercise in which I will not end up making money? In fact, I even might make a loss. So the purpose is very clear. But remember, there is a big challenge here. And that challenge relates to the accuracy of the predictions that you make. That is the big thing. So we will look at that again today. Let us start with that. So the merits are very clear. It considers time value. So we are looking at the present value of each of the cash flows. It considers all the cash flows over the life of the project. Now, as we look at other methods, you will find that there are some methods which do not look at all the cash flows. Okay, then it generally gives the same acceptance rule as the NPV method. The acceptance rule was very simple, that if it is positive, you accept. If it is negative, you reject. And if the NPV is zero, then in that case, you at least know for sure that you will not be losing money. You will get back whatever you invested. So then in that case, you need to think about non-financial reasons. If you still want to do the project, then you will have to think of some benefit that the company may get other than money. Maybe it will gain in terms of image. Maybe it is important for the mission of the company. Maybe it is something which will help the environment. Something should be there which will be positive for the company. So this was one part. Now, the limitations of this is basically that it is very difficult actually to, like figure out the actual predictions. So a project may have multiple rates of return. It may not have a unique rate of return. So depending on how you predict and the predictions you actually make, it is very difficult to, make those predictions correctly. So that is the biggest problem there. You see, you will have to anticipate in year one, I will make so much money. Now, the moment you say I will make so much profit, it means you are saying that I am going to make so much sales. My costs will be exactly like this. So practically speaking, you will have to make a profit and loss statement, a projected profit and loss statement for each of the years going forward till the project comes to an end. And when you make this profit and loss statement, only then will you be in a position to actually find out the profits that you will get after paying taxes.
And it is a tough exercise. I once did this for a jeweler company. They wanted to see what it's a very good company which is based in Bombay, and they had called us over to say that, okay, you people teach finance. Why don't you use some financial instrument, some financial theory that you have to look at the figures that we have and to project into the future? So we sat with them, we took the figures that they had, we spoke about what they plan to do, and we were able to come up with a projection of each of the revenue items. So it was very similar to this exercise, to basically find out what will be the profit that you will get if your projections are correct. But then the main issue then also was that the projections that you make, I will make so much sales. The main issue is the sales projection. I will be able to sell so much of goods. In this case, it was jewelry. And the costs, you will have a better idea because every company has a certain number of employees. They are pretty clear about their expenses. If it is the raw material costs may go slightly up and down. That is slightly tricky. But otherwise, costs is easier to predict. The sales part is tougher because it depends a lot on how easily your product is accepted in the market and whether people buy your goods or not. And only then can you actually get sales. So the main point here is predicting the cash flows correctly. And the other issue is to estimate the cost of capital correctly. So that is another thing which is difficult to make, especially when you are making a projection for 5 years, 6 years, 7 years. So costs of capital will also change. So because of that, it becomes a little unreliable sometimes. So those are the basic things which you should remember about this. And then we come to another variation of this, which is known as the profitability index. It is the same thing. It is just the way you present the analysis. In the first case, in the case of NPV, you are presenting in terms of the net present value, the actual amount of, let's say, the extra that you will make over and above your investment in present value terms. In IRR, we were trying to figure out what will be the internal rate of return. So basically, those two are very similar. And in this one, we are trying to look at a ratio. So profitability index is the ratio of the present value of the cash inflows and the initial cash outflow. So you have predicted your cash inflows over the next 5 years. Once you have made those predictions, you have reduced them all to their present value. Once you have done that, you have discounted them. So let's take this example, the same example, 10 lakhs. Let's assume that it's not the same example, sorry. We have variable cash flows. So in year 1, after investing 10 lakhs, I get a profit of 2,50,000. In year 2, I get 2,80,000. Year 3, 3,50,000. Year 4, 3 lakhs. Year 5, 2,50,000. So it is not a linear progression where it is going up, proportionately each year. It is going up and down. Now, I am assuming that the actual cost, the opportunity cost here is 10%. So I am discounting these at 10%. So when I discount them, let's say the first 250 by 10%, I get 2,27,273. Year 2, I again discount by 1.1 to the power 2. I get 231. Year 3, I do the same exercise. Then I add up all these figures. I end up with a positive figure here, 10,81,772. From this, if you minus 10 lakhs, you get your NPV of 81.
But you can also reduce this to a ratio like this. So I take my present value of the total of the present value of the cash inflows. I divide it by the actual investment, 10 lakhs. In this case, 10 lakh 81,772 divided by 10 lakhs. And that gives me 1.08. So the basic principle is the same. If I am above 1, that means this particular project is profitable. If I am less than 1, then it is not profitable, so I should reject. And if it is exactly 1, then in that case, it is similar to the case where NPV is 0. So there you have a choice. You are not losing money. So you have a choice. You can do the project for other reasons, for non-financial reasons, or you can reject it and look at another project which you think is better for you. This recognizes the time value principle. It is consistent with value maximization because you're looking at a positive figure here, more than 1, you're maximizing value. Index can be used to compare projects. So if, let's say, I have 2-3 projects and I use this method to find out the profitability index of each of the projects, then it becomes easy for me to compare the different ratios of different projects. So let's say I have 3 projects, A, B, and C. One is 1.08, one is 1.50, one is 1.03, let's say. Then I know that, these are my ratios. This is what I'm likely to get. This is the profit I'm likely to make if I go for these projects. And then on that basis, you can take a decision on whether you want to go with it or not. So this was one. Basically, just remember that rule. Any project with a positive NPV will always have a profitability index of greater than 1. Because you can see NPV here is positive. The profitability index here is also greater than 1. So it's a very simple, logical, arithmetical thing, not something to which I think will confuse you in any way. Prerna, are you following this? There is a question from previous slide. Okay. Previous slide. Yeah. Okay. Huh. Here. There's a limitation, means we can also calculate the means simultaneously we are working on different project. So the amount of that capital we can calculate together. See, you can calculate in this sense. Suppose you have enough capital to fund 2 or 3 projects simultaneously. Correct. Is that what you are asking? Yes. So let's say I have 100. I have 100 rupees. And I am going to use this 100 rupees in 2 projects. In one project, I am going to put 60. In one project, I am going to put 40. Now, based on the predictions that I make of the cash inflows, I can then arrive at the actual IRR for both projects. And then I can compare them. And if I find that the IRR is higher in a particular case, I can then take a decision. But see, if I am doing a calculation using an NPV method, net present value method, since I have already done the hard work and made the predictions, it is always best to do both calculations. Do the IRR calculation also, do the NPV calculation also, look at both figures. If required, have a look at the incremental also. If there is a conflict between your two, you see in the slide previous to this, we had also calculated incremental cash flows. But that is only required if the IRR is giving you one indication and the NPV is giving you a different indication. But normally that will not happen. Normally you will find that if the NPV is positive, the IRR for that project will also be better than the other project in which the NPV may be positive, but it is less than the NPV for this project. Now you will have to see whether you have enough capital to do it together. If the capital is there, then Vivek, there is no problem. You can continue with this.
Correct. And you can add these figures. Na? See, like if I'm getting an NPV of, let's say, 9%. Yesterday Yesterday example. example, let's say in the NPV, let's say I'm getting 9 lakhs in one case. In the other one, the NPV, the other project I'm doing, I'm getting 10 lakhs. If I do both projects, I will get 10 plus 9, 19. So you can add. Correct. Naturally, IRR you can't add, that is a percentage, but NPV you can definitely add. So if you have the figures with you, it will help you to take a decision. That is the whole logic here. Okay? Right, sir. Now, we will go to the next thing here. Now, I just included this because this is something which, this is an older method. Probably using this method today is, nobody is going to do this. But this is a very easy, simple method which does not use present value. See, this is almost like taking a notepad, making a few, writing a few figures there and doing it on that basis. So what is payback method? This is the number of years required to recover the original cash outlay invested in the project. So if the project generates constant annual cash flows, then the payback period is calculated by dividing the cash outlay by the annual cash investment. You will understand this immediately. Suppose the cash inflow expected is rupees 12,500 per year, and it has a life of 7 years. Initial investment is 50,000. So payback is basically telling you how many years will it take to get back my original investment. I had original investment. What is the amount I had invested? 50,000. With that 50,000, every year I will get back 12,500 rupees. Then I can find out how many years will it take for me to get that 50,000 back. See, this thing, it works good in personal finance. This system will help you in personal finance, where you can say that, okay, if I invest in this particular, let's say, in this bond which this company is giving us, how long will it take me to get my investment back? If I invest in a bank deposit, how long will it take me to get that investment back? You can do these things and try to figure it out like that. Or if you go for a business also, you can probably use it. But this is better, I think, at a personal level. If the cash flows are uneven, then the cash flows are added year by year to see the number of years it takes to recover the original outlay. So it will work something like this. Suppose the cash flows are uneven. In the first example, we said that every year I will get 12,500. 50,000 rupees was there. So that means in 4 years' time, I will get my 50,000 back. Now, if I am not getting a fixed amount back every year, I am getting variable amounts, then also it is very simple. Look at this. Suppose I invest 20. First year I got 8. Second year I got 7. That means total I have got back 15. Third year I got 4. So my total is 19. Fourth year I got 3. So it is 22. So how many years does it take to get back my first investment? Basically, it is 3.5 years. Simple method, nothing great about it. The positive thing is simple to use. Risk of the project can be tackled by having a short payback period. So in this case, the basic fundamental rule is go for a project which returns the invested amount as early as possible. So I am looking to get back my original investment. That is my way of handling risk. Risk हम कैसे कम करें? ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं जिसमें हमें जल्द से जल्द अपना ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा. उसके बाद से प्रोजेक्ट जब तक चलते रहेगी, वो मेरा मुनाफा. That is the thinking in this.
So further, the firm is able to reduce its overall risk by taking projects that have a short payback period. So see, the longer the payback period is, the more the risk is there. So if a project takes 6 years to give back the original investment to you, then for 6 years you have to maintain sales. You have to maintain your business. If it gives it back to you in 4 years, then the problems which you face are for the first 4 years. After 4 years, even if you don't do so well, at least you'll be satisfied that I have got my money back. But remember, this is not as per present value. This is as per actuals. Now, the emphasis is on early recovery of the initial investment. पैसे वापस कितने दिन में आएंगे? Payback. That is the main focus here. It gives an idea of the liquidity of the project. The funds released from the project can be put to other uses. एक तो ये हो गया. Negative क्या है? इसमें it does not consider the timing of the cash inflow. अब जैसे ये 8,000 पहला साल में आया, इस 8,000 की वैल्यू और इस 7,000 की वैल्यू जो ईयर 2 में आया वो बराबर है. जो 4,000 आया वो समझो कि वो 4,000 पहले साल में आए या 4,000 तीसरे साल में आए. यू आर गिविंग इट इक्वल वेटेज because you are only looking at the actual amount. You are not discounting it. So this is one weakness, if you know this. Then there is the next method is, just a minute. एक और इसमें प्रॉब्लम. It does not consider the inflows received after the payback period. मतलब कि अगर हमारा जो सोच है वो उस पॉइंट तक है जिस पॉइंट तक हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के पैसे वापस आ गए. एक बार वो पैसे आ गए वापस, उसके बाद जो उसमें इन्फ्लोज आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट तो बंद हुई नहीं है अभी, प्रोजेक्ट अभी भी चल रही है, तो उसमें जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं. तो दैट मीन्स उस प्रोजेक्ट में कितनी जान है, वो कितने फंड्स हमको दे सकती है, वो उस चीज पर हम ध्यान पेबैक मेथड में नहीं देते हैं. सो लुक एट दिस. सपोज वी डिस्काउंट. अगर हम इसको डिस्काउंट करके निकालेंगे, अगर हम एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लेते हैं एंड वी से इट इज 10%. नाउ year 0 में, in this example we can see that as per the NPV rule, project A only can be accepted. Payback method may give wrong results because it failed to consider the present value and inflows received after the payback period. कैसे वर्क कर रहा है? हम 4,000 रुपए लगाते हैं ईयर 0 में. शुरुआत हो गई, 4,000 रुपए पैसे हम लगा दिए इसमें. पहला साल नथिंग केम. प्रोजेक्ट ए, there was no receipt, nothing. I did not receive any cash inflow. Year 2, I received back 4,000. So as per the payback method, I have received my money back in 2 years. 1 and 2. 4,000 lagaya. Second year aate, I have got back my 4,000. So if I just look at payback period, it is 2. But then in year 3, again I make, the project generates another 2,000. Now, if I find out, if I discount each of these by 10%, get the present value of each of these, then at the end of it, I end up with an NPV of 806. That means 4,000 hai, total mein cash flows after discounting, total comes to 4,806. So my netted present value will become 806. In the other method, in project B, I get 2,000 inflow in the first year and I get a 2,000 inflow in the second year. Now, when that happens, third year, I get nothing. So according to the payback method, it is giving you the same answer, 2 years. You are getting your money back in 2 years in both cases. But in the
you are also getting an extra 2,000 rupees in the third year, which is increasing the NPV. In this particular case, NPV is actually negative. It is only minus 530. But if I did not do this NPV calculation, then in that case, I would have given equal weightage to both these, A or B, because I'll only look at the payback period. In both cases, the payback period is only 2 years. So maybe I can think for me, it is the same. Go for project A or go for project B. It's all the same. I can do any one of the two. But in reality, project A was better. But we can only find that out when we use the present value NPV method. Another example illustrates the problem of not taking into account the timing of the cash inflows. So look at this one. Project C. You invested 5,000. In year 1, you get back 3,000. Year 2, 2,000. Year 3, 2,000. Payback period in both cases is 2 years, because see, 3 plus 2, 3 plus 2 plus 3, 5,000. You have got back your initial investment in 2 years in the first case, project C, also in the second case, project D. Now, if you calculate the NPV by discounting the cash flows at 10%, you will get an NPV of 881 in C and 798 in D. Now, as per the payback method, both projects C and D are desirable. दोनों ही ठीक है. But when we consider the NPV, we note that project C is better as it has a higher NPV. Thus, payback is not a measure of profitability. Basically, क्या इससे पता लगता है कि wealth कितना create हो रहा है, वो payback method से हम नहीं जान सकते हैं. But when we use a NPV method, we are able to understand it better. This is an older method. So just keep it in mind that this was also used once upon a time to understand and to make sense of projects. So दूसरा, इसमें एक improvement लाया गया कि हम cash flows को discount कर देते हैं, discounted payback. तो इसमें क्या किया गया कि we discount the cash flows and then we see how many years it takes to get back my investment. जैसे ये 4,000 लगाया, without पहला साल में आया 3,000, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1. 4,000 वापस आने में कितना टाइम लगा? 2 साल. 3,000 plus 1,000, I have got back my money in 2 years. So this is simple payback. Now, अगर हम discounted payback करेंगे, so I will discount each of these cash flows by in this case, I am taking it at 10%. मैंने discount किया, ये 3,000 घट के हो गया 27. 1,000 जो 2 साल के बाद आया, it becomes 826. 1,000 which came after 3 years becomes 751. और year 4 में जो आया, उसको हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं अभी. हमारा पैसा यहां पर 2.6 years में वापस आ जाता है. Okay. Now, if I calculate the NPV of all this, it comes to 987. In this case, project Q, यहां क्या हो रहा है? First year nothing came. Second year I got 4,000. Third year I got 1,000. In this fourth year I got 2,000. अगर simple payback method से देखते हैं तो ये 4,000 वापस आने में कितने साल लगे? 2 साल. Because in the second year I received 4,000. Now if I go as per the present value method, तो हमारा जो second year में 4,000 आया, उसका present value is 3,304. Third year में जो 1,000 आया, उसका present value is 751. और fourth year में जो आया, उसका value है 1366. तो इस केस में हमारे पैसे वापस आने में कितना टाइम लगा? 2.9 years. मतलब यहां पर आके पैसा वापस आ रहा है. Sometime in the third year, 2.9 years. So discounted payback से क्या पता लगा कि जो पहला प्रोजेक्ट था उसमें 2.5 साल लगते थे, इसमें 2.25 साल लग गए. लेकिन एक और चीज इसमें पता लग गया
इसमें अगर हम एनपीवी के हिसाब से करते हैं तो द सेकेंड प्रोजेक्ट दैट इज गिविंग मी मोर. The first NPV was 987. The second is 1421. So I'm getting back more. Sir, can we click on that formula? Can we? Formula. Can we show the formula, means NPV at the rate 10%? We have added the formula here, or directly we I am calculate? just saying that my discounting formula is 10%. That means that Okay. you will discount it in the same way. So 4,000, see, here it is 0. Correct. 4,000 divided by 1.21. 1,000 divided by 1.21 multiplied by 1.1. It will give you a figure. Correct. That it will be that. Here it will be 1.1 to the power 4. 2,000 divided by that will give you 1366. Here I should correct this actually. Here the exact figure should come. I think I've made a mistake here by not discounting it. I will do this. Okay, and do this and send it. When I send it to you, I'll have fixed this. So that will be there. So you can see this was an improvement on the payback method system. In many respects, it is a useful thing to remember. Okay, so this is there. Then we come to another method. This is the accounting rate of return. This is the last one in this section. So in this is also known as the return on investment method. It uses accounting information as shown in the financial statements to measure the profitability of an investment. So it is the ratio of the average after-tax profit after tax, divided by the average investment. So ARR is equal to average income, profit after tax, divided by average investment. So example, assume that the investment made in a project is 40,000. Its average earnings over 5 years is 3,200. The book value of the investment depreciates every year, reaching 12,000. Remember when we were starting this section, I had also spoken about depreciation. So when you invest in a project, you are investing in assets, and the value of those assets in your book of accounts is going down every year by the amount of depreciation. Now, since this is an accounting rate of return, it is taking the depreciated value of the assets in each year. Now, the average investment becomes 20,000 after considering depreciation. The rate of return will therefore be 3,200. This is the profit, average profit, by the average investment, 3,200 divided by 20,000, which is equal to 16%. So, and in the next slide, I'll show you the calculation. The rule for acceptance is very simple. The higher, the better. Whichever project gives me a higher return, that is better for me. But remember, this is just an accounting return. So this is a little photo I took from a standard management textbook. So you can see it's calculated here. Look at earnings before depreciation, interest and taxes, EBDIT, 10,000 in year 1. Depreciation is 8,000. Earnings before interest and taxes is 2,000. Taxes is 1,000. Earnings before interest and after taxes is 1,000. So basically, I am looking at this figure. This is the calculation. We will be doing more of this in accounts. This is the calculation. But this figure here, 1,000, is my profit after tax. In the second year, this profit after tax goes up to 2,000. In the third year, it is 3. Fourth year, it is 4. And in the fifth year, it is 6. Now, if I take the average of these, 6 plus 4, 10, 13, 15, 16, divided by 5, I will get 3,200. Okay? This part is clear. Now you take the book value of the investment. So when I invested in the beginning, the book value of my investment was 40,000.
Now, in that year, depreciation is 8,000. So at the end of the year, the value of this 40,000 becomes 32 because 1 year's depreciation. Beginning of the second year is naturally whatever was the figure at the end of the first year will be the figure at the beginning of the second year. शुरुआत उसी figure से होगी, तो 32,000. Now from 32 again you reduce 8, ये 24 हो गया. Now in this particular case, इन दोनों का average क्या आया? 36, 40 plus 32 is 72. 72 divided by 2 is 36. In this case, 32 plus 24, 56. 56 divided by 2 is 28. Now here 24,000 is the opening balance in the third year. उससे 8,000 कम कर दिए, तो I get 16,000. 16 plus 24, 40. 40 divided by 2, 20. 20 is the average for the third year. अब ये 16 यहाँ ले आइए. 16,000 is the opening balance for the fourth year. Reduce 8,000. You get 8,000 again. 16 minus 8 is 8. Now what is the average for that year? Beginning of the year was 16, end of the year is 8. So the average is 24 divided by 2, 12. Last year, I start with 8, end with 0 because हमारा खत्म हो गया. उसका इतने साल का life था, it is over. So I end up with 0. So 8 plus 0 divided by 2, 8,000 divided by 2, 4,000. Now I have these figures here, 36, 28, 20, 12 and 4. इन चारों को अगर हम add कर दें, divide by 5, I will get 20,000. So this is how you calculate the average book value. And here is the calculation of the average profit after tax. Now what you do is you divide the profit after tax by the average book value. Average profit after tax divided by average book value, you get 16%. This is what is known as an accounting rate of return. ये भी एक तरीका होता है पता लगाने का कि what are you getting. It may not make you really इसके basis पे आप decisions लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी if you are going to have a project, it will force you to make all these projections. ये सारे projections हैं, remember. आपको सोचना होगा कि year 1 में हमारी पोजीशन क्या होगी, year 2 में क्या, year 3, year 4, year 5, हर एक साल की प्रोजेक्शन आपको करनी है. और उसके बाद it will help you to find out कि what are the profits you are projecting. और if you do this exercise, both Vivek and Deepti, please note this. If you do this exercise, you can use these figures as your cash inflows after tax and then use it for calculating NPV also. See, यहाँ पे you are not discounting the cash flows. Remember this. So there is a question is there. हाँ. We can also calculate monthly because we are paying tax monthly. लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. अगर आप प्रोजेक्शंस करोगे ना विवेक, तो मंथली का कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो. यू कैन, मैंने अगर आपको एक बहुत एक्यूरेट आ जाएगा और थोड़ा इसका एवरेज, बट इट विल बी मतलब यूजलेस लेबर इन माय पॉइंट ऑफ व्यू. सी ये एक इंडिकेटिव चीज है. दिस इज ना इज ओनली एन इंडिकेशन. इट इज गिविंग यू एन आइडिया दैट दिस इज द वे योर profits will happen over the next 5 years. अब इसको आप मंथली निकालेंगे तो मेहनत आपको उतना ज्यादा होगा. That means you will have to make 60 projections. यहां तो 5 आपने किया ना, उसमें you will have to make 60. तो in my opinion it will be extra labor without too much value. कोई ज्यादा value उसमें है नहीं. See, this is not accuracy based. It is indicative. वो आपको एक आइडिया हो रहा है कि अगर इस मेथड को हम फॉलो करें. देखिए इसमें इन माय ओपिनियन यू आर गेटिंग टू थिंग्स हियर. यू आर गेटिंग अ वेरी क्लियर प्रोजेक्शन ऑफ योर प्रॉफिट्स.
Right. And once you get this projection, इसको लेके आप एनपीवी कैलकुलेट कीजिए. Calculate your NPV. ये इसको यूज कीजिए as your cash inflow. Use this as your cash inflow. Then you see what the NPV comes to. If the NPV is coming positive, that is very important. At the same time, as an additional figure, you can keep this in mind, and it will give you at least some figure. This is, if I did not discount the returns, then this would have been my profit. Average profit हमारा 16% होता. See, so it will give you, these are different indications which will tell you whether you are taking the decision correctly or not. सही दिशा में आप चल रहे हैं कि नहीं, कम से कम ये तो पता आपको लग जाएगा ना. So once you know that, then it is possible for you to take a decision. Remember all this. एक जितने methods अभी हम लोगों ने देखा, whether it is ARR, payback, NPV, IRR, discounted payback, जो भी था, all these methods, the purpose of all these methods is the same. The purpose is to make you first sit down and make the calculations. Make those projections. बिना projections के आप इनमें से किसी भी मेथड को यूज नहीं कर सकते. देखिए, फाइनेंस के जितने फॉर्मूलाज हैं और जितने मेथड्स हैं, सब के, we have someone new today, आकांक्षा. फाइनेंस के जितने हमारे पास में प्रोजेक्शंस हैं, in all cases it is based on estimates, and those estimates have to be accurate. If the estimate is not accurate, it will not be possible for you to arrive at a meaningful result. That is the basic thing here. If you get a meaningful result, then only it is, it's of some use to you. Deepti, any questions here? Deepti, are you there? No, yes, sir. So this part of it, the accounting rate of return, this is something which for you, it will be very instinctive, because profit and loss statements, EBI, EBITDA, and all these things is something which is very much part of your area. Yes, sir. So you can see where this is going. This is giving you a average profit over a period of 5 years. But the only way you will be able to arrive at this ARR is if you make the predictions, estimates correctly. So if you make wrong assumptions, see, projecting or forecasting figures in finance is ultimately all about making assumptions. And those assumptions, how accurate those assumptions are, how you arrived at those assumptions, that is the, let's say, that will be the basis for understanding how good your result is. If you cannot get the projections correct, these ratios will never be correct. So that's the big thing here. So I think this brings us to the end of the capital budgeting part. So we will move to the next section now. Just let me.
Just a minute, guys. I just have to looking for the correct presentation here. Okay. So our next unit, it's a very small unit, which I think we will cover, and then we'll proceed to the next part of our course. Just let me switch the fan on, please. So think I'm so fortunate that the fan is not compulsory here. It's so cool. So the next part which we are doing is that, see, we had spoken about the concept of dividends. Remember when we said that companies which make a profit, that profit, like suppose there's a company, it makes 100 rupee profit after taxes. Because they have paid taxes, they've done everything. They've made, let us say, a profit of 10 crores. Let's take a bigger figure. Let's say they made a profit of 10 crores. Now the question is, should I take these 10 crores and should I distribute it to my shareholders as dividend? Or should I take these 10 crores and should I invest it in the company to expand the company, to make it bigger and to increase the potential of the company, to increase the sales of the company and to earn more profits in the year ahead? There are two ways now. I can either try to earn money in the year ahead, in the years ahead, or I can take the money that I have already earned and I can give it to my shareholders as a reward for investing in my company. Now, there is a clear trade-off. If you invest the money, then your company grows and your capacity to make more profits in the year ahead will grow. Let's say you take that money, you invest in machines. Let's take a very simple, old example. You increase the capacity of your plant. Let's say you're making steel. You put in a set of machines, you increase the capacity of the plant to make steel. Your marketing department manages to find you more buyers. You are able to make more sales. Therefore, once you make this investment, your profits, your potential for making more profit will be higher than it is today because you have more capacity. Okay? Now, this in the long run will be better for the company. But there is one problem with this approach. Many of your shareholders, including the larger shareholders who have made this company, for them, the main reward is the dividend that they get. You think of the large shareholders who are, let's say, owning 20% or 15% or even 10% of the company, of the larger companies. For them, the dividend which they receive is a huge, huge amount. They get lots of dividends. Now, if you say that I will not give dividend in the interest of making this company bigger, then the biggest losers here will be those people who had made the largest investment. So giving dividends is also something which the company has to consider. It does not have the option of saying that I will not give dividends. It has to consider that always. Now, what happens is that
One way can be go for a compromise and you say that I will take 50% of the profits. I will invest it in my company, build up the capacity of the company to make more profits. And the other option is, and the other 50%, what I will do is, I will distribute that as dividends to my shareholders. So in this way, what happens is the shareholders are also happy. They have got something. On the other hand, the company also has some capital with which to grow more. Remember, without capital, we cannot go for fresh projects. So this is one way. I do it I can expand, or I can have a, some sort of a compromise, give part of the profits to the shareholders and the other half I invest in the company. But there are other methods also of giving a dividend. And that is what I want to look at in this particular presentation. Forms of dividends. Because this is again something you should be aware of this part also. So when we come to forms of dividend, see, one is a cash dividend. This is simple. So companies mostly pay cash dividends. If balance is not available in its account, it can borrow funds. ये भी हो सकता है to pay the dividend. Now, cash dividend में क्या होगा? It is called cash, but basically what will happen is you will transfer the amount of dividend to each of the shareholders as per the books of your company. Who are your shareholders? You know, their names are there in your books of account. You take it, you transfer it to them. Once you have decided how much to give, this is one way of doing it. So when a dividend is paid, the reserves and surplus account is reduced by this amount. This amount will be reduced. Other ways, you can give bonus shares. So an issue of bonus shares is the distribution of shares free of cost to existing shareholders. So here what is happening is money is not entering the company. Normally what happens is that when you have an IPO or you have an FPO, then what happens is that there is a flow of money into the company. But in the case of a bonus share, what you are telling your shareholder is कि देखो भाई इस बार हम डिविडेंड आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाओगे, हमारे पास कुछ है आपके लिए, ये एक शेयर लो आप. And the bonus share will be given to you generally in proportion to the amount of shares that you have. Now in India, there is a rule that bonus shares can only be given in addition to cash dividend. Issuing bonus shares will increase the number of outstanding shares. Naturally, since you are issuing shares, the number of shares which are there will increase. Now, bonus shares are generally issued proportionately. So, for example, if a shareholder has 100 shares and the company decides to give a 10% bonus issue, the shareholder will get 10 shares. So basically, what happens is that whatever shares the existing shareholders have, उसी का एक percentage इन लोगों को मिल जाएगा. Whatever the company decides, they will get that. But please remember, shares will come. The number of outstanding shares in the market will increase because everybody will, suppose somebody has 10 shares. Initially, या take a case, simple case, आपके पास 100 शेयर थे कंपनी comes out with a 10% bonus, आपको 10 शेयर और मिल गए. अच्छा, आप जैसे जितने लोग थे सबको जो है अपना 10% मिला, तो जो टोटल शेयर्स मार्केट में है, those total shares will now have a value, the number of shares will increase by 10%. उतने ज्यादा शेयर्स मार्केट में आ जाएंगे. Sir, same as splitting of any shares, split हुआ. It is same or different? Splitting is different. We'll come to splitting. Splitting, that is a different type of thing. Here, what is happening is
you are getting extra shares. Splitting में what is happening is that the value of your share is being reduced even as it is being split. जैसे मेरे पास एक है, एक के दो हो गए, लेकिन अगर एक का वैल्यू 100 था तब वो 50 हो गया. उसका मतलब स्प्लिटिंग का पर्पस डिफरेंट है ना. स्प्लिटिंग में आई एम ट्राइंग टू टेक अ शेयर, मेक इट्स करंट मार्केट प्राइस लेस, छोटा, उसको डिनोमिनेशन हम छोटा कर रहे हैं, so that the trading increases. Correct. More and more people can buy these shares. अगर आपके मन में ये धारणा है कि भाई 100 रुपए वाले शेयर कम लोग खरीदते हैं और इसको अगर हम स्प्लिट करके 50 कर देंगे तो ज्यादा लोग चाहेंगे खरीदना आपका शेयर, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इट विल बिकम कन्वीनियंट, सो ट्रेडिंग वॉल्यूम इन माय शेयर्स विल इंक्रीज. If this is what you are looking for, then you will go for split. But in bonus shares, you are giving someone extra shares. आप वैल्यू को टच नहीं कर रहे हैं. ओके, सो declaration of bonus shares will increase paid up capital and reduce the reserves by the same amount. Balance sheet में there will be a transfer. ऊपर में कैपिटल है, उसके नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस से उतने पैसे निकल के, जैसे सपोज करो 100 करोड़ के बोनस शेयर्स हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस उतना कम जाएगा, कैपिटल उतना बढ़ जाएगा, बिकॉज शेयर इज शोन इन इक्विटी कैपिटल. तो देयर विल बी अ ट्रांसफर इन द बैलेंस शीट. टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स नेट वर्थ विल रिमेन द सेम, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. नॉर्मली एक ही चीज याद रखना है कि बोनस शेयर में नेटवर्थ हमारा नहीं बढ़ रहा है. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इनफ्लो ऑफ फंड्स इनटू द कंपनी. ओके, नाउ अ बोनस इशू इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ recapitalization of the reserves, because रिजर्व्स का एक सेक्शन को हम निकाल के उसको हम कैपिटलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको हम कैपिटल में शिफ्ट कर दे रहे हैं. So the number of shares are increasing, the reserves and surplus are going down. It is an accounting transfer. ये accounting transfer है from reserves and surplus to paid up capital. ठीक है, तो कंपनी का नेटवर्थ सेम रहा, उसमें कोई फर्क नहीं आया. ओके, जैसे प्रायर टू इशू ऑफ बोनस शेयर्स, पेड अप कैपिटल 1 crore at 10 rupees 10 crore, शेयर प्रीमियम 15 crore. ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 crore, टोटल नेटवर्थ 33 crore. सपोज ये एक एक्सट्रैक्ट है हमारा लायबिलिटी साइड किसी बैलेंस शीट का. जिस वक्त ये शेयर प्रीमियम को हैज नथिंग टू डू विथ योर बोनस शेयर्स. जिस समय कंपनी अपनी आईपीओ लेके आई थी, उस समय ये बेसिकली क्या की थी कि 15 crore का प्रीमियम उनको मिला था उस समय, उतना एक्स्ट्रा पैसा में ये बेची थी अपने शेयर्स को, और दैट अमाउंट हैज टू बी शोन सेपरेटली, तो वो यहां अलग से दिखा दिया गया 15 crore, दैट शेयर प्रीमियम थी. रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं जो यहां पर पहले से आ गई, वो है 8 crore. टोटल नेटवर्थ इन तीनों को आप ऐड कर लो 33 crore. Now ये कंपनी लीला लिमिटेड decides to go for a 10% bonus issue. 1:10. That is 10 lakh new shares will be issued to the existing shareholders. देखिए अभी 1 crore shares है of 10. अगर हम 10% करेंगे तो 1 crore का 10% क्या होगा? 10 लाख. 100 crore 10%, 100 lakh sorry is equal to 1 crore. So 10% is 10 lakhs. Now, so a shareholder with 10 shares will get 1 share. The shares are issued at market price of rupees 30 per share, rupees 20 over the face value. ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, ये पेड अप कैपिटल हमारा हो गया 11 crore. ठीक है, 1 crore शेयर्स एट रुपीज 10, 11. हमारा शेयर प्रीमियम हो गया 17 crore, उसमें जो 2 रुपए का ये था. रिजर्व्स एंड सरप्लस हमारा कम गया, 2 crore यहां गया, 1 crore यहां गया. बट व्हाट आई हैव डन नाउ इज आई हैव रिड्यूस्ड द, ये 8 से इसको हम कर लिए 5, तो हमारा जो नेटवर्थ है इट विल रिमेन एट 33. दिस इज द थिंग टू रिमेंबर इन अ बोनस शेयर.
ये एग्जाम्पल में चूंकि शेयर प्रीमियम भी था, इसलिए एडजस्टमेंट दोनों अकाउंट्स में हुई। अगर शेयर प्रीमियम नहीं होता, then it would have been done here only. Okay, so this is another way of giving a benefit to my shareholder. So just to understand, the shares were issued at rupees 30. Total amount is rupees 3 crores, 10 lakhs into 30. Reserves are reduced by 3 crores. Share premium and capital increased by 2 crores and 1 crore respectively. ठीक है? So ये हमारा एक चीज हो गया. Now bonus shares and shareholders wealth. हमने लोगों को बोनस शेयर दे दिया. उनकी वेल्थ इस बोनस शेयर देने से बढ़ी या नहीं बढ़ी? This is the next thing we have to look at. What do you think, Deepti? What happens in these cases? विवेक जी, आपको क्या लगता है? अगर किसी को बोनस शेयर दिया जाए, तो will it lead to an increase in the wealth of the shareholder? क्या उसका वेल्थ बढ़े, इससे बढ़ जाएगा ये देने से? What will happen? Sir, can you repeat the question again? Question is, हमने बोनस शेयर, जैसे किसी के पास में लेट्स से कि 100 शेयर थे, ठीक है, Right. और कंपनी एक 10% बोनस लेके आई, उसको 10 शेयर और दे दिया, उसके पास में 100 के बजाय 110 शेयर हो गए. Correct. Has it increased his wealth? What do you feel? It will definitely increase. It will definitely increase. Why? Because you feel कि उसके पास शेयर्स ज्यादा हैं, तो ये इंक्रीज हो जाएगा. Now what happens is, मार्केट जो है ना वो बहुत पारखी है. The market will look at one thing. Normally the value of the share of one share is you divide the net worth by the total number of shares. Now इस केस में क्या हो रहा है, whenever I give a bonus share, हमारा net worth same है, net worth is not changing, लेकिन the number of shares जो डिनोमिनेटर है जिससे हम भाग दे रहे हैं net worth को, वो 10% बढ़ गया मेरा. तो एक्चुअली क्या होगा कि the value of the share will go down proportionately. वो भी कम हो जाएगा. मार्केट वैल्यू विल बी लेस. बुक वैल्यूज की बात अलग है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू जो आपके लिए मायने रखती है, सी मार्केट वैल्यू के बिना पर ही आप किसी शेयर को बेच सकते हैं. What happens is the market will discount the share on the basis of the net, because on the basis of the number of bonus shares that have been issued, for the simple reason that the net worth has not increased. Net worth तो जो था वही है. अगर हमारे पास 10 शेयर, net worth was 100, number of shares अगर हमारे पास 10 थे, इसका 1 minute guys. Sorry for that interruption. So, in terms of the theory, bonus shares does not increase the wealth of the shareholders. So, earnings per share and market price of share will fall proportionately by 10%. इसलिए कि net worth तो बढ़ा नहीं. Since the net worth did not increase, there is a problem here. So, earning per share of Leela will decrease by 10%.
market price of the share will also fall by 10%. इसका कैलकुलेशन देखिए इस तरह से है. नेट प्रॉफिट earnings of the company is 2.20 crores. EPS earning per share, मतलब कि अगर हम इस जो earnings हमारा है इसको अगर हम लें and I divide this by the number of shares by 1 crore shares, I will get rupees 220. Earning per share हमारा 220 है. EPS after bonus issue कितना हो जाएगा? 2.2 divided by 1.1, because आपने 10% का बोनस इशू दे दिया, उसमें आपके नंबर ऑफ शेयर्स 1 से 1.1 हो गए, तो हमारा अर्निंग पर शेयर भी घट के हो गया 2. नाउ अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर विथ 100 शेयर्स बिफोर बोनस वो कितना होता था? Just 1 minute, 1 minute, please. हाँ, no problem. विवेक, आपने देखा इसको, इस टेबल को? सी, इसको फिर से एक साथ देखते हैं. अर्निंग पर शेयर ऑफ लीला लिमिटेड विल डिक्रीज बाय 10%. ये कैसे होगा? देखिए, नेट प्रॉफिट जो कंपनी की है वो है, लेट अस से 2.2 crores. टेक दिस एग्जांपल. अर्निंग पर शेयर है, टोटल प्रॉफिट को लीजिए, डिवाइड द प्रॉफिट बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास 1 करोड़ थे, तो 2.2 करोड़ पर 1 करोड़ से हम डिवाइड करें, पर शेयर जो प्रॉफिट का हिस्सा हुआ वो हो जाता है 2.2 करोड़. ठीक है. नाउ अर्निंग पर शेयर आफ्टर बोनस इशू,
बोनस जब आप इशू कर देंगे तो ये 1 करोड़ जो है बढ़ के हो जाएगा 1,10,00,000 शेयर। तो अब अगर आप उस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ शेयर से, तो पर शेयर जो हिस्सा प्रॉफिट का है वो कम हो जाएगा। पहले जो है वो 2.2 था, 2 रुपए 2.2 और 20 पैसे पर शेयर, अब वो सिर्फ 2 रुपया रह गया। क्लियर ना? क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ जा रहा है। सो अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर विथ 100 शेयर्स, अगर किसी के पास 100 शेयर पहले से था बोनस के पहले, तो उसको कितना मिलता? 2.2 इंटू 100। ये पहले उसके पास में 2.2 पर शेयर था, 100 शेयर था इसके पास, तो 2.2 इंटू 100 हम करेंगे तो कितना होगा? 220 रुपए। नाउ बोनस, अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर्स आफ्टर बोनस, वो कितना होगा? इट विल बी 2 रुपीज इंटू 110। उस हालत में भी 220 ही होगा, बिकॉज हमारा पर शेयर जो प्रॉफिट था वो कम हो गया। एक तरफ बढ़ गया, एक तरफ घट गया, तो घूम के बाद वहीं पर रह गया। Now market price of the share will also fall 10%. 30 crore divided by 1.1 crore. तो ये हो जाएगा 27.7. Market value of total shares 27 into 1.1 is rupees 30. 29.99। बेसिकली क्या होता है ना कि इस पूरे क्रम में मार्केट विल एडजस्ट, लेकिन देर इज अनदर फैक्टर हियर। एक और फैक्टर इसमें होता है विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली तो फॉल कर जाता है, इमीडिएटली तो द शेयर वैल्यू फॉल्स, लेकिन मार्केट में इस चीज का एक बहुत पॉजिटिव वाइब जाता है, एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि ये कंपनी ने बोनस शेयर दिया। एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों के अंदर अंदर, 3, 4, 5 महीने, डिपेंड करता है ऑन द कंडीशंस, वो मार्केट वैल्यू फिर बढ़ जाता है। और जब वो मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शेयर होल्डर को डेफिनेटली उसका वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। सो इमीडिएटली मे बी देयर इज नो वेल्थ क्रिएशन, लेकिन लेटर ऑन इसमें वेल्थ क्रिएशन हो जाता है। The value of the shares of the company was 30 crores prior to the issue and remains the same after the issue. So जिस समय ये इशू, ये लोग बोनस शेयर जिस समय लाएंगे, at that point of time तो आप मान के चलें कि there will be no increase, no decrease, more or less things will remain stable. But what happens is कि इसके बाद later on the market generally tends to adjust, and in the end you gain something. Practically speaking, I have seen this with my own investments also, that whenever you get a bonus share, ultimately you win with that, you get more. But for that you have to be a little patient, you have to wait for the market to catch up. What are the advantages for the shareholder? So if a company is issuing bonus shares, there is a certain signal which is going to the shareholder. And what is that signal? The signal is there is an indication of higher profits. It means that this company is thinking positively. If the earnings do not rise and the bonus shares are issued, the earning per share will go down. This is not desirable. So a company issues dividends only when it expects an increase in earnings. तभी वो ऐसा काम करेगी। नहीं तो क्या होगा कि आप टोटल प्रॉफिट अगर कम गया, अर्निंग्स कम गया, आप नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं, तब तो अर्निंग पर शेयर विल बी लेस। तो कंपनीज विच आर वेरी कॉन्फिडेंट कि उसका जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज करेगा, ओनली दे डू दिस। दूसरा है बोनस शेयर्स गिव अ पॉजिटिव सिग्नल एंड हैव अ बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, ऑल्सो बिकॉज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि अगर आप बोनस शेयर देते हैं तो लाइक आई सेड कि उसमें एक पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट, और एक एक्सपेक्टेशन, एक माने लोगों के मन में एक धारणा सी बन जाती है कि ये दिस कंपनी इज एक्चुअली गोइंग टू डू वेल।
Then tax benefit, dividend is included in the ordinary income of the shareholder and taxed at the applicable rate. अगर आपको dividend मिलेगा कभी भी, तो dividend को जो है tax किया जाएगा. लेकिन bonus shares are not taxable as income. See, bonus shares में क्या है? It is not treated as income. In some countries, it may be treated as income, but in our country, a bonus share is not treated as income. So it is not taxed. अगर वो income नहीं है, तो obviously it will not be taxed also. So if the shareholder sells the shares, he will pay capital gain taxes. बाद में, let's say, हाँ. So here we can assume that the company is working on wealth maximization, not profit maximization. ठीक है. You can think like that. That's also correct. The company is taking a long-term view. और जैसे wealth maximization का basic concept वही है ना कि you take a long-term view of something. तो bonus shares जब आप दे रहे हैं, तो obviously you are looking ahead and you are thinking that in the days to come also, you are expecting to make good profits. तो आपका ठीक ठाक रहेगा. Profit maximization is more of a short-term thing. तो अगर bonus shares वगैरह हो रहा है, I would think that the company is focused on the future. And if it is focused on the future on long-term wealth, then definitely it is thinking in terms of wealth maximization. To that extent, I think I'll agree with you. So remember here, coming back to this tax benefit thing, if you get bonus shares, it is not taxed. But when you sell the share, when you sell that share, there will be a capital gains tax at that point of time. लेकिन tax is a part of what you earn. कितना भी होगा, even if there is a 30% tax, 70% will be your share. So you will earn something more. Then future dividends may increase. आने वाले दिनों में, since you have more shares, you will get more dividends also. This benefit is there for you. So if a company has been following a policy of paying a fixed dividend per share, an increase in shares will result in an increase in dividends. वैसे भी डिविडेंड का डिक्लेरेशन जो होता है, उसमें अगर आपके पास में शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है, तो it is quite obvious that you will get more. And like I said, there is a chance that in the days to come, the market will adjust, share prices will go back to a higher rate, and you will gain something. Now, company ko, what advantage does the company get? So, conservation of cash. पैसे तो नहीं लगे ना, dividend में तो they would have had to pay cash dividend. They would have to pay. It allows the company to declare the dividend in the form of shares without an outflow of cash. So the company is able to retain earnings which can be used for expansion, taking advantage of an opportunity. एक तो ये है. If the company is facing a tough cash situation and has to pay dividend to satisfy shareholders, it can pay a small dividend and issue bonus shares in addition. Remember, हमारे यहाँ bonus shares आप तभी issue कर सकते हैं जब आप dividend भी declare करो. It is not possible, but there is no rule which says that you have to give a big dividend. Dividend देना है तो ठीक है, हम छोटा सा dividend दे देते हैं और भरपाई हम कर देते हैं bonus shares देके. So let's say shareholders were expecting a 50%. Okay, 50% of the profits will be distributed as dividend. Now हमारा काम वैसे हो नहीं रहा है. तो what I do is 10% profits को निकाले, उसको हम shareholders में बांट दिए. और shareholders को खुश रखने के लिए बाकी चीज हम लोगों ने bonus shares देके उनको खुश कर दिए. So that can also be done. So that is one advantage. If you have a tough cash situation, आप नहीं चाहते हैं कि कैश कंपनी से बाहर जाए, जो भी कैश अवेलेबल है, you want to use it for building up the company, then in that case you can use this. Now दूसरा इसमें एक और इशू है कि अगर बोनस शेयर्स मार्केट में आ जाती है और इसके चलते अगर शेयर्स की कीमत कम हो जाती है, मे बी
it will help smaller investors, जिनको कि इनके पास पैसे कम है, basically it will help them to enter the market and to invest, because value has reduced a little. This is a purely just एक थॉट है, प्योरली इन थियरी, हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन जो ऊपर वाली बातें हैं, ये दोनों पॉइंट्स, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अदर फीचर हियर इज इंडिया में देर आर अ नंबर ऑफ कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स. ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी के पास में ये राइट है टू इशू अ बोनस शेयर. तो पहला तो ये है कि इट कैनॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ अ डिविडेंड. आप डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर नहीं दे सकते. कंपनी हैज टू गिव अ कैश डिविडेंड एंड गिव द बोनस शेयर्स इन एडिशन टू, उसके ऊपर से आप दीजिए. दूसरा है, यू कैन ओनली इशू अ बोनस शेयर इफ द पेड अप शेयर्स आर फुल्ली पेड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पेड अप शेयर्स का आपने कुछ पैसे आपने ले लिए. ऐसा होता है पार्टली पेड अप शेयर. जैसे लेट्स से द शेयर वैल्यू इज 10, तो हमने कहा कि भाई आज आप 8 दे दो और बाकी 2 बाद में देना, तो इट्स पार्टली पेड अप. अगर उस तरह के शेयर्स हैं, देन द लॉ सेज दैट फर्स्ट यू शुड गेट दैट 2 रुपीज बैक, फुल्ली पेड अप हो जाए, उसके बाद फिर आप बोनस शेयर. And it makes sense also, because bonus shares जब भी आप देंगे, it will have the value of the full share. तो ये बड़ा अजीब सा चीज होगा कि हमारे जो अर्लियर जो शेयर्स थे वो पार्टली पेड अप थे, 10 के शेयर का एक्चुअली 8 का वैल्यू था, और इधर जो बोनस शेयर्स हम देंगे 10 के पूरे 10 होंगे. तो यू कांट हैव दैट. नाउ द बोनस शेयर अमाउंट कैनॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर्स. ठीक है, ये भी एक चीज है. यू कैन गिव अ पार्ट, उससे ज्यादा नहीं. बोनस शेयर्स हैव टू बी पेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम रिजर्व एंड अदर फ्री रिजर्व्स. कैपिटल रीवैल्यूएशन रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड. ये कैपिटल रीवैल्यूएशन रिजर्व जो है ना, दिस इज एन अकाउंटिंग रिजर्व. ये क्या होता है कि जैसे हमने कंपनी स्टार्ट की, 40-50 साल हो गए, अब जो हमारे पास कंपनी के पास जो लेट्स से लैंड जो भी था, यू थिंक ऑफ ओल्ड कंपनीज, उनका आज से 50 साल 100 साल पहले जब कंपनी बनाई गई थी, उस समय जो जमीन की कीमत थी और आज जो जमीन की कीमत है, दोनों के बीच में आसमान जमीन का फर्क है. सो व्हाट सम कंपनीज डू इज दे इंक्रीज द वैल्यू ऑफ देयर रिजर्व्स, और उसका नाम दे देते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व्स. मतलब क्या होगा कि हमने अपने एसेट्स, जो जमीन अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं, let us say on my books it is only 5 lakhs, आज के दिन में it is worth 20 crores. तो हम क्या करेंगे कि अपना उसको बढ़ा लेंगे टू 20 crores, और वो जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो इस साइड में, बिकॉज द बैलेंस शीट है ना, यू हैव टू बैलेंस इट, इस साइड में उसको हम एक रीवैल्यूएशन रिजर्व नाम का आइटम में वहां पे उसको पार्क कर देंगे. तो अगर मेरा वहां पे 20 करोड़ बढ़ गया, तो वो 20 करोड़ मेरे लायबिलिटी साइड में इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस, इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. अब क्या है कि अगर बोनस शेयर देना है, तो यू कैनॉट पे फ्रॉम दिस. सी, यू कैनॉट मेक द एडजस्टमेंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व. अगर बोनस शेयर पे करना है तो यू विल हैव टू डू फ्रॉम योर रेगुलर रिजर्व्स एंड सरप्लस, or you will have to do from your share premium reserves. But you cannot do it from the revaluation reserve, because that is only a accounting thing. ना, you have just increased the value. Actual cash flow नहीं हुआ है, पैसे तो आए नहीं है आपके पास. Means वही क्वेश्चन मैं I want to raise, but you clear it in the next statement. हाँ, that the value is only for reservation. हाँ. Can we use it or not? You explained already. Because it does not, basically आपने क्या किया है कि you have made your balance sheet bigger. कि हम दोनों साइड्स को बढ़ा लिए, अपना एसेट्स का वैल्यू बढ़ा लिए, लायबिलिटीज में एक नया हेड खड़ा कर दिया. ठीक है, इट मे बी करेक्ट, इसमें भी करेक्ट. कल होके अगर कंपनी को बेचने की नौबत आ जाएगी तो दिस विल हेल्प.
इससे एक Right. ज्यादा बेहतर आइडिया होगा मार्केट को कि आपकी कंपनी की वैल्यू क्या है. बट एट द सेम टाइम इट इज ओनली एन अ रीवैल्यूएशन विच इज नोशनल. ये मतलब एक्चुअल कैश नहीं है. ये कैश में कन्वर्ट हो सकता है कब? जब आप बेचोगे तब. जैसे उस जमीन को आप बेच देते हो, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी. लेकिन जब तक वो जमीन को आप बेचते नहीं, तब तक तो ये जस्ट एक आपके हिसाब से Piece एक of एस्टिमेट document. में हमारी जमीन की वैल्यू बढ़ी हुई है, उसको हमने अपने बैलेंस शीट में डाल दिया. इसलिए कंपनी लॉ सेज यू कैनॉट यूज दिस फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग अ बोनस शेयर. एंड इसका लॉजिक बहुत क्लियर है. नेक्स्ट क्या है कि अगर बोनस शेयर देना है, जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है ना, दे हैव टू अप्रूव इट. मतलब जो एनुअल जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, वहां पर एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि भाई हम बोनस शेयर्स देना चाहते हैं, एंड देयर दिस हैज टू बी अप्रूव्ड. So that is another thing. Next thing is, and this is also very important, the company should not be in default of payment of statutory dues. Statutory dues कौन सा dues है? वो कर्ज जो कि by law the company has to pay. For example, company के जो employees हैं, companies has to pay the salary of those employees. कंपनी को बैंक्स को पेमेंट वापस करनी है. दे हैव टू मेक दोज रीपेमेंट्स. ये स्टैट्यूटरी है. कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स हैं, उन बॉन्ड होल्डर्स को जो है उनको अपना इंटरेस्ट देना है. दे हैव टू पे इंटरेस्ट टू दोज. कूपन जो रेट है उसका, उस हिसाब से दे हैव टू पे इंटरेस्ट टू दोज बॉन्ड होल्डर्स. नाउ द पॉइंट हियर इज दैट इफ दे हैव नॉट पेड सैलरीज टू देयर स्टाफ, पेड द ड्यूज टू द ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, repaid the banks, paid interest to the bondholders, then that company cannot then give bonus shares. ये नहीं कर सकता. ठीक है. फर्स्ट इट हैज टू, भाई आपके जो लेजिटिमेट एक्सपेंसेस हैं, पहले उन एक्सपेंसेस को आप दे दीजिए. यू पे फॉर दोज एक्सपेंसेस. वंस यू हैव पेड दैट, आपका बिल्कुल देयर इज नो ड्यूज ऑन यू, then you can think of giving a bonus share. So maximum bonus issue ratio is 1:1. One bonus share for each share held by the shareholder. इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते. ठीक है. अगर किसी के पास में 100 शेयर है, तो उसको मैक्सिमम आप 100 शेयर तक ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं. वरना क्या होगा, अगर आप ज्यादा दे देंगे तो जो ओरिजिनल शेयर थे वो कम हो जाएंगे और बोनस वाले ज्यादा हो जाएंगे. थिंक ऑफ इट. टोटल शेयर्स आपके पास 10 करोड़ थे, आपने 2:1 कर दिया. अब जो बोनस वाला है वो 20 करोड़ हो गए और जो ओरिजिनल थे वो 10 हो गए. दैट यू कैन डू दैट. वो अलाउड नहीं है आपका. बिकॉज इसमें हमने लिखा है ना कि यू कैनॉट हैव मोर, द बोनस शेयर अमाउंट कैनॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर्स. वो नहीं हो सकता है. इसलिए वो कैप 1:1 का है. ठीक है, बहुत उदार हमें, जितने शेयर्स आपके पास हैं उतने ही शेयर्स आपको मोर दे देते हैं, बट नॉट मोर देन दैट. तो ये कंडीशंस हैं फॉर अ कंपनी इन इंडिया विच वांट्स टू इशू बोनस शेयर्स. अब आता है जिस पॉइंट को आपने रेस किया था, शेयर स्प्लिट. नाउ इसमें क्या है कि यू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर्स थ्रू अ प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन द पार वैल्यू ऑफ द शेयर. पार वैल्यू माने बुक वैल्यू. कंपनी के बुक्स में अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है और आप स्प्लिट करते हैं 1/2, तो उस क्या होगा कि 2 शेयर हो जाएंगे अब उसी 100 में. पहले एक शेयर था 100 में, अब 100 में 2 शेयर हो जाएंगे. सो व्हाट विल हैपन इज, एक शेयर की कीमत अब हो जाएगी 50 रुपये. सो द वैल्यू इज नॉट इंक्रीजिंग. सो द शेयर स्प्लिट अफेक्ट्स ओनली द पार वैल्यू एंड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स. दोनों ही चीज चेंज कर जाएगा. पार वैल्यू कम हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे. नेटवर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टोटल फंड्स जो होंगे दैट विल रिमेन अनऑल्टर्ड. उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा. नेचुरली उसमें क्या फर्क आ सकता है, जितना एक साइड बढ़ेगा उतना प्रोपोर्शनली दूसरा साइड कम हो जाएगा.
इसका एक इलस्ट्रेशन हमने बना दिया। नंबर ऑफ शेयर्स 1 करोड़ है, इसकी कीमत है 10 करोड़ टोटल, ठीक है। पार वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। शेयर स्प्लिट के बाद ये 2 करोड़ हो गया, इसको अब तोड़ दिए और इसको ₹5 कर दिए, तो हमारा जो अमाउंट है, द पेड अप शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है, इट रिमेन्स एट 10 करोड़, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। Why are bonus shares issued? To make trading in, sorry, why are shares split? ये यहाँ पे गलती है, इसको एक मिनट। तो why are shares split क्यों किया जाता है? To make trading in shares attractive. आप देखेंगे कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कि शेयर्स को स्प्लिट वगैरह करती नहीं है बहुत, और कुछ कंपनीज, पेज इंडस्ट्रीज करके कंपनी, पेज इंडस्ट्रीज का एक शेयर का वैल्यू इज आई थिंक मोर देन 40,000 रुपीज। नाउ इसका मतलब अब ये हो जाता है कि इसमें ट्रेडिंग बहुत कम होगी। मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स 99% विल नॉट बी एबल टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ शेयर जिसकी मार्केट वैल्यू इज 40,000। अगर उसकी शेयर को स्प्लिट कर दें, जैसे 1/10 टाइप का कर दें, 4,000 रुपए तक ले आए, ट्रेडिंग विल इंक्रीज। लेकिन इनको शायद नीड नहीं है इन सब चीजों की, तो दे डोंट डू दैट। दूसरा है कि अगर आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स अगर ज्यादा हो रहा है, तो मार्केट ऑल्सो टेक्स दिस एज अ सिग्नल कि आने वाले दिनों में आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो ज्यादा होंगे। दिस इज अनदर एस्पेक्ट हियर। और ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे हर शेयर होल्डर के पास, तो कल होके अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो दे विल गेट मोर डिविडेंड्स ऑल्सो। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ शेयर स्प्लिट। ये वाला जो दो चीज इसमें था ना, शेयर स्प्लिट और बोनस शेयर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन टू यू कि बेसिकली व्हेन वी गो फॉर दिस डिविडेंड्स की जब बात होती है, तो कैश डिविडेंड के अलावा बोनस शेयर्स का इशू करना वो भी एक मेथड है ऑफ सेटिस्फाइंग शेयर होल्डर्स। और शेयर स्प्लिट्स जो होता है उसमें भी एक पॉजिटिव सिग्नल शेयर होल्डर्स को मिलता है। सो इन बोथ केसेस एक इसमें इट इज गुड फॉर द शेयर होल्डर, बेसिकली ये इसमें इशू है। तो आई थिंक ये वाला जो पॉइंट हमारा है, ये दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ओवर। तो हम यहाँ पर इसको आज कंप्लीट करेंगे एंड वी कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। और एक यूनिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वी हैव लेफ्ट, वन यूनिट इज लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। नाउ जो वैल्यूएशन वाला यूनिट है, नॉर्मली दैट इज स्लाइटली टेक्निकल। तो हम जनरली क्या करते आए हैं इतने दिनों से कि उस यूनिट को हम लास्ट में रखते हैं, आफ्टर वी फिनिश आवर अदर यूनिट्स। हमारे पास में जो और यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट इसके बाद है, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो वो सब जब हम पूरा कर लेंगे तब एक रिवीजन का दौर फिर एक आएगा ना, उस समय हम वैल्यूएशन उसी वक्त में करेंगे आप लोग के साथ। तो अभी आफ्टर दिस आज वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय कोर्स। सो ये फाइनेंशियल वाला जो पार्ट था
फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला वो यहाँ पर आज इसको यहाँ पे खत्म कर रहे हैं करेक्ट। और वी आर गोइंग मूविंग इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जब कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल गो इनटू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एंड जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरी हो जाती है देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल लुक एट ये द वैल्यूएशन पार्ट, उसके बाद रिवीजन, और उसके बाद हमारा ये जो इंट्रोडक्टरी टाइप का जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाता है। तो अब जो सेक्शन हम लेके आएंगे आपके लिए, दैट सेक्शन इज बेसिकली अबाउट मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंसेस। उसमें इट इज जैसे अभी जो बात हो रही थी, दिस वाज अबाउट मैनेजिंग द फाइनेंसेस ऑफ अ कंपनी। Correct. लेकिन अब जो हम करेंगे इसमें, दैट इज गोइंग टू बी द मैनेजमेंट ऑफ योर पर्सनल फाइनेंसेस। ठीक है। और इसमें एक वेल्थ मैनेजमेंट का भी सेक्शन है। दैट वेल्थ मैनेजमेंट इज, वो ठीक है, व्हेन वी गेट टू इट यू विल सी। हालांकि द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन माय माइंड इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट थिंग। सो Wealth maximization also same as a company, means that the company will think, so we can also नहीं apply नहीं on नहीं a. नहीं 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 नहीं, ये यहाँ जो वेल्थ वाला जो है ना, वेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट Okay, मैक्सिमाइजेशन। okay, वेल्थ it's wealth मैनेजमेंट management. होता है बेसिकली कि जैसे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास में पैसे बहुत है, उन लोगों के लिए व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग एंड फॉर बिल्डिंग अप देयर वेल्थ। तो देर आर सम पीपल हु गो फॉर एज अ प्रोफेशन, वो बना लेते हैं, वेल्थ मैनेजर्स बन जाते हैं बैंक्स में। तो आजकल एक इस तरह की मतलब पोस्ट हो गई है जहां पर एक वेल्थ मैनेजर होता है। आप जैसे एचडीएफसी में अगर आप जाएंगे तो दे हैव अ सेक्शन, आपके पास में लेट्स से कि यू हैव इनहेरिटेड सम वेल्थ, और पैसे आपके पास में ज्यादा आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको कैसे करके इन्वेस्ट करें। तो you can, if let's say if you have an account with HDFC or ICICI, most of these private banks have this facility, so they will direct you to the wealth manager, और जो wealth manager होगा he will look at the amount of money that you want to invest and he will suggest कि भाई आपके लिए ये ऑप्शंस हैं जो बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे बैंक के थ्रू क्या क्या हो पाएगा, बैंक में हैव अ टाई अप विथ एन इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके जो सारे स्कीम्स हैं वो आपको बताएगा। म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं, उसके साथ जो स्कीम्स उसके हैं दे विल टेल यू अबाउट दैट कि दीज आर आल्सो स्कीम्स यू कैन इन्वेस्ट हियर आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट they might give you some more advice with regard to how you can borrow money, use those funds, पर्सनल लोन्स आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लोन्स ले सकते हैं, माने दे हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच दे कैन एक्सप्लेन टू यू। अगर बैंक उस समय कोई गोल्ड वाला स्कीम होगा तो दे मे इवन इनकरेज यू टू बाय गोल्ड फ्रॉम द बैंक। तो उस तरह के कई चीजें हैं, वी लुक एट दैट इन दैट सेक्शन। बट टू डू दैट यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड द different types of asset classes which are there for personal investment। because देखिए, किसी और के लिए जो आप इन्वेस्टिंग करेंगे उससे पहले ये जरूरी है कि आप समझ जाएं कि कितने क्लासेस ऑफ एसेट्स हैं। अगर वो आपके लिए अच्छा है तो वो दूसरों के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो इसलिए दोनों जो फाइनेंशियल प्लानिंग और वेल्थ मैनेजमेंट है, बोथ दीज थिंग्स आर लिंक्ड। तो लेट मी जस्ट टेक यू टू दैट प्रेजेंटेशन, दूसरा वाला जहां ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। क्या इसमें हम लोग करेंगे? सो वी विल लुक एट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग,
concept of asset classes, risk and return trade-off and risk profiles, life cycle analysis. ये इंश्योरेंस के लिए होता है, इंटरेस्टिंग चीज है ये वाला. Introduction to financial planning, wealth management industry, role of banks in financial planning, client profiling and client management. मोर और लेस ये है. लेकिन इसमें जो एसेट क्लासेस वाला पार्ट है, जिसमें हमने इसका पार्ट्स नहीं लिखा है, देयर वी विल बी लुकिंग एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स इंडिविजुअली. जैसे हमने वी लुक एट इक्विटीज, Sir, look at 1 minute mutual break funds. required. विवेक आ गए क्या? Yes, sir. Just 1 minute. बता दीजिएगा. आई एम वेटिंग. Yeah. Cool. सो इसमें पहले फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लेते हैं, देन वी लुक एट दीज डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट एसेट्स, रिस्क प्रोफाइल्स, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ्स, लाइफ साइकिल एनालिसिस. ये सारी चीजें विल ट्राई टू डू दिस. ओके, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? बेसिकली आप अपना पर्सनल फाइनेंसेस को एक फ्यूचरिस्टिक व्यू लेके you try to make a plan thinking of the future. Normally क्या होता है ना कि when you think about your personal finance, you are focused more on the present. खर्चा आज का निकल जाए, जैसे भी हो. इतने भी पैसे हम लोग के पास आ जाते हैं, we have this ability to spend all the money. और अगर हम ऐसा करते हैं, then in that case we are not preparing ourselves for the future. So the question here is, how will you manage your finances and prepare for all of the potential costs and issues that may arise? आने वाले दिनों में आपको एंटिसिपेट करना है कि जो भी इश्यूज आएंगे
आपके जो लायबिलिटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको निभाने के लिए जो चीज आपको चाहिए, उनको आप किस तरह से निभा पाएंगे। आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आज का है, लेकिन जो जिंदगी लंबी है, यू हैव टू थिंक अबाउट so many responsibilities between now and the time you stop earning. देखिए ये है period. You are earning today, at some point in the future you will stop earning. उसके बाद भी लेकिन you have a life. उस point के बाद भी there will be a period in your life when you are not earning, but there will be expenses. तो अगर आप, और इस बीच में जो सफर हमारा है अभी से लेकर रिटायरमेंट तक, इस बीच में बहुत सारी चीजें हैं। घर है, गाड़ी है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, शादियां हैं, बहुत तरह की चीजें हैं। हर एक, ऑल ऑफ दीज थिंग्स देयर आर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व। तो अगर हम आज से इसका प्लानिंग नहीं कर, देन इट कैन बी पोटेंशियली अ वेरी रिस्की सिचुएशन फॉर अस। तो इसमें जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो प्रोसेस हमारा है, उसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल्स। आपका गोल है क्या? फाइनेंशियल गोल। इसमें वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर गोल्स, एनी नॉन फाइनेंशियल गोल से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। व्हाट इज द, फॉर एग्जाम्पल, इफ एजुकेशन इज अ गोल, उसका फाइनेंशियल कंपोनेंट क्या है? एजुकेशन ऑफ माई चाइल्ड इज अ गोल। तो इसमें क्या करना होगा? आई हैव टू एस्टिमेट कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ही गोज टू स्कूल, ट्यूशन फीस क्या होंगे, अदर एक्सपेंसेस क्या होंगे, अप टिल द टाइम ही लीव स्कूल। हो सकता है कि ही कंपीट्स, ही गोज इनटू अ कॉलेज, वो कॉलेज के हॉस्टल फीस क्या होगा, उस कॉलेज का ट्यूशन क्या होगा, और वो कॉलेज वाले जो दिन आएंगे वो आज से 15 साल आगे है। तो वहां पर आई हैव टू मेक एन इंटेलिजेंट एस्टिमेट कि उस जमाने में कॉलेज एजुकेशन कॉस्ट क्या हो सकता है। बिकॉज इफ आई एम नॉट प्रिपेयर्ड और इफ आई एम मेकिंग द रॉन्ग एस्टिमेट्स हियर, देन व्हाट विल हैपन इज कि जब टाइम आता है कॉलेज जाने का, मेरे पास पैसे नहीं। इफ आई डोंट हैव मनी, तो फिर क्या होगा? आई विल बी फोर्स्ड टू गो फॉर इनटू बोरोइंग, एंड बोरोइंग इज नॉट इजी। इसलिए कि देन उसका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो भी काफी लंबा होता है। मे बी बाय दैट टाइम आपके पास में अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, और वो जो एजुकेशन लोन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रीपेइंग दैट एजुकेशन लोन मे गो टू योर चाइल्ड। तो वो फिर अपनी जिंदगी शुरू का, माने जो उसका जो वर्किंग लाइफ है, उसकी शुरुआत वो करेगा किस चीज से? एक लोन के साथ। सो इट इज अ ट्रिकी थिंग। वेस्टर्न कंट्रीज में जहां की पेरेंट्स आर वेरी क्लियर कि एक बार बच्चा कॉलेज चला गया, उस कॉलेज का जो टोटल एक्सपेंसेस है, दैट विल बी बोर्न बाय द चाइल्ड। पेरेंट्स उसमें बहुत कम इंटरफियर करते हैं। पेरेंट्स जो है वो, उनका कहना है कि भाई कॉलेज जाके पढ़ना है, चलो थोड़ा बहुत मदद हम कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट इज फॉर यू। और यानी इफ इट इज एन एक्सपेंसिव थिंग, लेट्स से कि आप मेडिकल में जा रहे हैं और अब आप अमेरिका में, कॉस्ट इतना ज्यादा है कि दे आर फोर्स्ड टू टेक लोन्स, और वो जो लोन्स लेते हैं वो इतना ज्यादा, मतलब उसमें इंटरेस्ट और जो बर्डन आता है इनके ऊपर, कि ये अपने वर्किंग लाइफ के अच्छा खासा समय उसका बीत जाता है इन जस्ट रीपेइंग दोज लोन्स। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ देयर। हमारे यहाँ पे उससे कुछ कम है, बट यहाँ पर एक दूसरा पहलू उसका है कि हम जनरली इन इंडिया वी कंसिडर इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द एजुकेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो एक आपके पास में गोल पहले से सेट है। हाउ यू कैलकुलेट द एक्सपेंसेस, ये दैट इज अ डिफरेंट इशू। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द एप्टीट्यूड ऑफ योर चाइल्ड, कहाँ जाने की संभावना है,
जिस संस्था में जाता है उसमें क्या अप्रोक्सीमेट एक्सपेंसेस उसमें होगा, वो आपको एक फाइनेंशियल गोल्स आपके पास आ जाएंगे। उसके अलावा अनदर बिग गोल जो आपके सामने में है, दैट इज कि मे बी यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ हाउस, कि हम कोई, अगर आप इफ यू आर वेरी श्योर कि भाई इस शहर में ही हम सेटल होना है, देन यू विल बी थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ हाउस। तो अब ये थोड़ा इजियर है कैलकुलेट करना, बिकॉज अगर आप अगले 4-5 साल के अंदर अंदर इस चीज को करना चाहते हैं, तो एक फ्लैट की क्या प्राइस है आज के दिन में, दैट यू कैन कैलकुलेट। इसमें ऑब्वियस है कि यू विल हैव टू बोरो सम मनी, तो जो बैंक से आप लोन लेंगे उसका इंस्टॉलमेंट क्या हो सकता है, जो अपफ्रंट फीस है वो आप कितना दे पाएंगे। इसमें जो, अगर नॉर्मली बैंक्स क्या कहती हैं कि 15 से 20% जो घर की कीमत है वो आप दीजिए, तो बाकी जो है 85 to 80% वो हम देंगे। तो 15% के लायक भी आपका सेविंग्स होना चाहिए। लेट्स से यू आर बाइंग समथिंग जिसकी कीमत है 50 लाख, तो अगर उसका 20% हो गया तो आप कितना हो गया, यू आर टॉकिंग अबाउट 12.5 lakhs। हाँ, तो करेक्ट। ये वाला जो पॉइंट है हमारा, सॉरी, यू आर टॉकिंग अबाउट 10 lakhs डिवाइडेड, हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट 10 lakhs। तो अगर हमारा ये हो गया कि 10 लाख मुझे चाहिए 5 साल के अंदर, देन एक इमीडिएट गोल आ गया आपके सामने, भाई दिस इज देयर। इसके अलावा यू मे थिंक, और अगर इफ यू टेक अ हाउसिंग लोन of 40 lakhs, what will be the rate of interest and what will be the installment? You must have the capacity to pay that installment from your income. So you have to anticipate your income also. मतलब ये जो एरिया है फाइनेंशियल प्लानिंग का, this is an area which will force you to look very, very carefully at your finances today and your goals tomorrow and how you propose to fund those goals. इसलिए ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर है, current financial situation, identifying your goals and then developing and implementing relevant recommendations अपने लिए कि क्या किया जाए इसके लिए। फर्स्ट आपका शुरुआत यहां से होता है, इवैल्यूएट योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। आज के दिन में इनकम आपकी कितनी है, एक्सपेंसेस कितनी है, सेविंग्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है। फर्स्ट स्टार्ट हियर। देन ये वाला जब काम हो जाए, यू कम टू योर नेक्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई योर गोल्स। उसके बाद तीसरा, दिस इज द प्लान, मेक अ प्लान टू मीट दीज गोल्स। ये 3 इसके पार्ट्स। नाउ इन तीनों चीजों को let us look at in some more detail in our next slide. So basically, what are we thinking of? A plan for managing your financial resources so as to meet all your present and future needs. ये एक ट्रेलर हो गया, जिस चीज को अब टेकअप करेंगे तो हमारे पास में इसमें आगे जाने का कोई सेंस नहीं है। 5 मिनट और है, तो अगर कुछ सवाल आपके हैं तो उसको हम लोग उसके बारे में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगले नेक्स्ट सैटरडे व्हेन वी मीट, उस समय वी विल स्टार्ट विथ दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये जो पार्ट है, ये यू विल एंजॉय दिस ऑल्सो, दिस पार्ट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा ड्राई हो जाता है बिकॉज इट इज अकाउंटिंग, लेकिन फॉर यू विवेक इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, because you are already, and for Deepti, I'm sure that will also be, she'll be very comfortable there. Lekin for Deepti, this may not be so interesting. Right. हाँ, ये वाला जो section है, because maybe she is at a stage in life where she has some time before she seriously has to think about financial planning. But the advantage for her is that if she is aware of these things, it will make it easier for her in the future. And this is all about resources today, goals
your needs tomorrow and how you plan to meet those needs with the resources that you have. तो इसको करने में पहला काम है इसमें, start with making a small balance sheet. कि आज के दिन में आपके पास में क्या assets हैं, क्या liabilities है. Number 2, try to make something like a personal profit and loss account. कि क्या इनकम आपको होता है महीने में, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या सेविंग्स हैं, एंड देन यू ट्राई टू थिंक कि आज के दिन में उन सेविंग्स के साथ आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग. करेक्ट. ये प्रोसेस को आप स्टार्ट कीजिए. वंस यू बिगिन टू थिंक अबाउट दिस, देन व्हेन वी गेट इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन थिंक कि आपके लिए कौन सा एसेट्स ठीक होगा और हर एक एसेट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है. I think if you don't have questions, we will stop this here today, and we can again start with this news section on next Saturday. Okay. Thank you, Vivek. Yeah. Thank you, sir.